Good morning guys. My previous video रे मैं देखिले न्यूक्लियर फिजिक्स रो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ता विषय डिटेल्स में किसी पढ़ी देन आज वीडियो रे मैं आउ ता ऊपर जहाँ कॉन्सेप्ट रहा कि किसी डिस्कशन का विषय करिए ओके देन हमें न्यूक्लियर आज न्यूक्लियर फोर्स विषय डिस्कशन करिए आई होप तुम प्रीवियस वीडियो रे जिसको डिस्कशन करते तुम बुझ पड़ते हो न्यूक्लियर फोर्स तो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स the force which is responsible for binding the nucleons together inside the nucleus is called nuclear force. ताले कौन जाने जो force द्वारा the force which is responsible for binding the nucleons together inside the nucleus is called nuclear force. nucleons का क्या है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये बोथ को कॉम्बो को कंबाइन को हमें न्यूक्लियस को तो न्यूक्लियस भीतर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी रहे प्रोटॉन प्रोटॉन भीतर रहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन भीतर भी फोर्स है ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधी रखे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधी रखे हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधी रखे हैं जो फोर्स का रेस्पॉन्सिबल इनसाइड द न्यूक्लियस एटा न्यूक्लियस हुए ताले ता भीतर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भीतर फोर्स था एउटा बाइंडिंग फोर्स था प्रोटॉन प्रोटॉन भीतर एउटा बाइंडिंग फोर्स था न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ताका भीतर एउटा बाइंडिंग फोर्स था से जो बाइंडिंग फोर्स था जे टुगेदर रखे बांधी के रखे से फोर्स को हम कोन कहू जे ना न्यूक्लियर फोर्स बोले कहू छै ठीक अछि तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स then comes characteristics of nuclear force. Characteristics of nuclear force. कौन characteristic ना तार नेचर प्रॉपर्टीज कौन रहा न्यूक्लियर फोर्स टा केमते जेंति हम जानछे प्रीवियसली में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़छे बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़तो तार characteristics अच्छी इन नेचर केमती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो ना इट इज गोटे सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स तो सेमती नेचर आर देता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स में किसी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी और सर सब कौन कौन फर्स्ट पॉइंट इट इज an attractive force always ये सब बड़े अट्रैक्टिव ये रिपल्सिव है परिमाण जहाँ जहाँ भीतर भी पड़ोसी न्यूक्लियर फोर्स है जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो समय ये अट्रैक्टिव ऑलवेज ओके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स is a non-central force. What does it mean? आर माने कौन non-central force माने ना because if आर meaning होची जे the force is not directed along the straight line joining the two nucleons. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को गोटे जे स्ट्रेट लाइन जॉइन करिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हो प्रोटॉन प्रोटॉन को जते हम गोटे स्ट्रेट लाइन रे जॉइन करिया तल से स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन रे ए फोर्स टा पडियो माने नै सो इट इज ए non-central force. Okay, third it is a short range force. That is it ranges up to a distance of nuclear radius. It is a short range force that it
that is it ranges up to a distance of nuclear radius mean 10 to the power 15 meter minus 15 meter भितर 10 to the power minus 15 meter भितर ए फोर्स टा एग्जीक्यूट करिवो बियॉन्ड दैट इट फेल्स आउ फोर्स आर रहिबो ना तो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स आउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कोन रोजी टोटल अट्रैक्टिव नॉन सेंट्रल शॉर्ट रेंज फोर्स is the strongest force in nature. Nature जैसे सब force अच्छी सबुठारु strongest जो basic fundamental चार्टा force हम रोजी ताकि सबुठारु strongest force होची nuclear force. It is the strongest force in nature. It is charge independent. ये फोर्स टा चार्ज ऊपर डिपेंड करनी आर ऑलरेडी आर एक्सप्लेनेशन तुम बतै दिथली कहिछि जो तुम देखियो जस्ट न्यूक्लियर फोर्स हेडिंग अंडर रे बुझुथला वाले कहिथली डायग्राम करी एठी जे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आउ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भीतर सबले न्यूक्लियर फोर्स सेम फोर्स ही पड़ता है ये चार्ज ऊपर डिपेंड करनी दीटा प्रोटॉन जे कि पॉजिटिव जे ताको भीतर न्यूक्लियर फोर्स जति पड़िबो दीटा न्यूट्रॉन भीतर सेति फोर्स पड़िबो आउ दीटा गोटे न्यूट्रॉन गोटे प्रोटॉन भीतर भी सेति फोर्स पड़िबो एटा चार्ज ऊपर डिपेंड करे नाही तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट नेक्स्ट इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स इट इज स्पिन डिपेंडेंट ये फोर्स ता स्पिन ऊपर डिपेंड करे दीटा सेम सिमिलर स्पिन दे माने अप स्पिन बट डाउन स्पिन भीतर थिबा न्यूक्लियस भीतर फोर्स टा स्ट्रांग हेता है ना कि अप और डाउन स्पिन भीतर थिबा न्यूक्लियस भीतर फोर्स टा तो एटा ना स्पिन डिपेंडेंट लास्टली इट इज अ सैचुरेटेड फोर्स it is a saturated force what does it mean saturated means saturated means the one nucleon will exert a nuclear force on the next neighboring nucleons not beyond that like suppose if you have a neutron rahila और if you have a proton then got a neutron got a proton suppose neutron proton neutron और एक got a neutron थिबो एक got a proton अछि एक got a neutron suppose एक got a proton neutron proton तो ए न्यूट्रॉन टा हम सेंटर टू कंसीडर करिवा ए न्यूट्रॉन टा केवल आ ऊपर फोर्स पके परबो आ ऊपर आर ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ ऊपर जस्ट नेक्स्ट नेबर ऊपर ना कि से आ ऊपर फोर्स पकेबो तो इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स ओके तो इस सबले सैचुरेट हुए तो नेक्स्ट नेबर न्यूक्लियस ऊपर से फोर्स टा एग्जीक्यूट करे तो ए न्यूट्रॉन टा आ ऊपर पके परबो किंतु ए न्यूट्रॉन टा आ ऊपर पके टे कष्ट जनरली एटा हुए नहीं एटा प्रैक्टिकली जिंस कंसीडर करा है जे देखाउ जिंस सेटा तो इट इज अ सैचुरेटेड फोर्स so these are some of the basic characteristics of nuclear force first author detect kori dekho it is an attractive force it is a non central force it is a short range force of the order of 10 to the minus 15 meter means nuclear radius bhitar eta rochi then it is the strongest force in nature it is charge independent spin dependent and saturated these are some of the basic fundamental characteristics of nuclear force okay next atomic mass unit m so mass of the particles in atomic as well as nuclear range is measured by atomic mass unit okay
तो न्यूक्लियर मास हो बा एटॉमिक मास हो एते छोट थाए जे ताको मैं किलोग्राम जनरली हम जोटा मेजर करछे किलोग्राम क्विंटल ऑल दैट थिंग जो हायर यूनिट्स रा मेजर करबे मास को फंडामेंटल्स रा तो से ग्रुप सब यूज करा जाने प्रैक्टिकली बट हियर हम तल कोन यूज करू ना स्मॉलर यूनिट ऑफ मास दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट इट इज आल्सो नोन एज यूनिफाइड यूनिट मास यूनिट ओके तो एटा को यूज करा जाए शॉर्ट फॉर्म रे एएमयू लिखा जाए एटॉमिक मास यूनिट ठीक अछि 1 AMU equals to mass of 1/12 of mass of C612 carbon atom and it is equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg देखो केजी रे मापिले गोटे एमयू 10 टू द पावर माइनस 27 ऑर्डर रे आसी तो एटा एते छोटो माने 1 रे 27 टा सुन दवा यदि 1 को डिवाइड कर जति हो सेति हला 1 एमयू पाखाबे तो सेते में तो एटा बहुत बड़े स्मॉलर यूनिट ऑफ मास तो हमें से एटॉमिक वा न्यूक्लियर रेंज रे हमें जो मास को मेजर करू त हमें एमयू यूनिफाइड मास यूनिट बा एटॉमिक मास यूनिट द्वारा मेजर करतो एटॉमिक मास यूनिट जहां यूनिफाइड मास यूनिट सेम तो यूनिफाइड मास यूनिट तो 1 m equal to 1/12 of माने 1/12 of mass of carbon C612 carbon isotope atom ओके तो आरो वैल्यू केते होची ना 1.66 into 10 to the minus 27 kg एटा हम मन रखियो मेजर तो इट इज आल्सो इक्वल टू 1 u 1 AMU जा 1 u से यूनिफाइड मास यूनिट आपको आ जाए यूनिफाइड मास यूनिट 1.66 into 10 to the minus 27 kg ठीक है जी तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ atomic mass unit नेक्स्ट ये जो मास यूनिट मास्टर जो हाल तको हमें तको एनर्जी रिप्रेजेंट तो हमें जानचे प्रीवियसली वी नो दैट आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस ଗୋଟେ कांसेप्ट अछि तो सब मास को मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रे 1 am को हम एनर्जी रे भी कन्वर्ट कर परिया जोटे कि हम हेल्प करे आगु न्यूक्लियर रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज हो से स्टडी करे पई जेमे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बा जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन जो एनर्जी लिबरेट होची से सब विषय स्टडी करे पई हेल्प करिवो तो एटे तो एक ह्यूज अमाउंट एनर्जी जो जूल जेमति कि हमें बहुत छोटा मास हेते और हमें एम यूज करछे सेमति एटा बहुत बड़ यूनिट हेती एनर्जी हेती और हम ताको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी रे यूज मेजर करिया ना कि हम जूल रे ओके सेतमे हमें एटा को करिया नेक्स्ट कांसेप्ट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस according to Einstein mass and energy are interconvertible okay according to Einstein mass and energy are interconvertible mass can be converted to energy can be converted to mass so simple base so similarly the sorry and it is represented as E equals to mc square where E is the energy equivalence of mass m and c is the velocity of light in air or vacuum okay phase space so the energy equivalence of 1 AMU mass will be E equals to 1 AMU into c square. Our mass here is m is formula is E equal to mc square. But here our mass is 1 AMU into c square. This is equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg into c value 3 into 10 to the power 8 whole square.
1.6 into 9 is 27 ଏତିକି okay. So this value comes out to be 931 mega electron volt. So the energy equivalence of mass 1 AMU, if some particle which is having a mass of 1 AMU and that mass will be converted anyhow into energy and then it will comes out to be 931. Actually there is a 0.5, so in round of factor it is written that 931 mega electron volt. गोटे AMU मास को जब एनर्जी रूपांतरित करबा ताले हम पाइबा केते ना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट रो एनर्जी पाइबा. So this is the concept, this is the way how mass is converted into energy by this formula. Okay, next. Mass of proton MP equals to 1.672 into 10 to the power minus 27 kg, or in AMU is equals to 1.0072 AMU. Convert कर लेते हैं इसको. Mass of electron Me 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, or it is equals to 0.00055 AMU approximately. Similarly, mass of neutron Mn 1.675 into 10 to the power minus 27 kg, or it is equals to 1.0086 AMU. So these are some of the masses in kg and different units in kg and AMU of the fundamental particles like the proton, neutron and electron. Now what a problem solve नहीं हो रहा था. Mass of hydrogen atom यार गोटे single electron अच्छी. तो हमें MH लिखिए. और energy खटास AMU लिखिए टा हमको 1.0078 AMU. तो हमें U भी लिख करियो. गोटे AMU जा गोटे U से unified mass. तो these are some of the concept. Okay. So हम problem solve रे help करियो रसू. Mass of proton MP kg रे, AMU रे mass of electron Me kg रे, AMU रे mass of neutron Mn kg और AMU रे mass of hydrogen atom. तो standard होते basic मन रखे. हमें तो atomic physics व nuclear physics रे problem solve करते हैं. इस तरह हम ये रसू दरकार है. Standard values रे हम सब मन रखे उपयोग रसू. Okay. Next. Then comes your nuclear stability. So देखा है एमती पाखापाखि 1500 न्यूक्लियड अच्छे आइसोटोप आटम्स तो एलिमेंट्स आइसोटोप्स को नहीं पाखापाखि 1500 न्यूक्लियड्स देखा से न्यूक्लियस मध्य 260 रु कम स्टेबल न्यूक्लियस अच्छा ना बाकी सब जाक अनस्टेबल. अनस्टेबल मीन्स से माने बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स हो बा नेचुरली हो से माने कौन करती ना अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल बा गामा रेस हो इलेक्ट्रॉनिक रेस हो निर्गत करती एमिट करती सेमिट करिक से माने लाइटर न्यूक्लियस बा स्टेबल न्यूक्लियस को कन्वर्ट हो चेष्टा करती. तो दिस इज ए प्रोसेस नेचुरलिटा होता है आर्टिफिशियल भी हो पाए. तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट हुए सो ये जो रिएक्शनटा होता है ये प्रोसेसटा हुए रिएक्शनटा को न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी कह जाए. तो बेसिकली कौन देखा जाए स्टेबिलिटीटा क्या डिपेंड करते हैं देखिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जोटा अच्छी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से बुझिले आम न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन
फिशन बा जो चेन रिएक्शन होची न्यूक्लियर रिएक्टर केमती न्यूक्लियर पावर प्लांट रे एनर्जी प्रोडक्शन कि ह्यूमन रो बेटरमेंट पे यूज कराउची ता विषय में आइडिया हेरो तो से जो कांसेप्ट होची आम देखाला 1500 रु पाखापाखि 1500 न्यूक्लियर अछंती तांको मध्यरु 260 रु कम प्ले स्टेबल न्यूक्लियस अछन जो माने कि हठात एमती किसी रेडिएशन करंती अल्फा बीटा गामा जे छाड़ती किंतु आठ छड़ा बाकी जिते सब रही पाखापाखि से समस्ते ये जिनटा करती कौन करती ना से अल्फा पार्टिकल हो बीटा पार्टिकल हो बा से गामा रेज हो एमिट करते रेडिएट करते जहाँफल कि गोटे लाइटर न्यूक्लियर कन्वर्ट हो जाती बा स्टेबल टे फॉर्मेशन अक्वायर करते तो से विषय में स्टडी आउ को कैरेक्टरिस्टिक केतरा बहुत तरह फीचर्स अच्छी जो कि जो फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी को न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को डिपेंड करे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को से न्यूक्लियस को स्टेबल करे भर आम केतरा जिते कोर्स अच्छे किसी बेसिक जिनसा पढ़ो तो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी या गोटे कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट भी known 1500 nucleids stable nucleids are less than 260 and the rest all are unstable, thereby emitting alpha beta particles and electromagnetic rays. Okay. जो प्रोसेस रेडा हुई था से प्रोसेस जो एमिट करते अल्फा बीटा गामा रेज को छाड़िया से प्रोसेस गोटे न्यूक्लियर अल्फा बीटा पार्टिकल व गामा रेज को एमिट करे रेडिएट करे से प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कह जाए न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी कह जाए मन रखियो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हम परर स्लाइड में पढ़िया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी सो यहाँ से कॉन्सेप्ट एते न्यूक्लियस भितर पाखापाखि 260 न्यूक्लियर स्टेबल्स थाए और रेस्ट ऑल सब अनस्टेबल थांती से रेडिएट करती एमिट करती ओके तो बेसिक कॉन्सेप्ट एटा सब अच्छा जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जोटा कहूँ न्यूक्लियर स्टेबल केमती देयर आर नंबर ऑफ न्यूमरस फैक्टर्स आर देयर टू मेक द न्यूक्लियर स्टेबल बट इन आवर डिस्कशन इन आवर टॉपिक वी आर हैविंग ओनली फ्यू concepts which are responsible for the stability of the nucleus. There are several factors responsible for nuclear stability. There are several factors which are responsible. There are several factors which are responsible for nuclear stability. But here we are going to discuss few of them. मैं ना करूँ किसी टा मैं डिस्कशन करिए, okay? कौन से रसू? Some of the factors. As follows. First होची Neutron Proton ratio.
neutron proton ratio is one of the factor which is responsible for the stability of the nucleus. Okay, तो कौन देखा वाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो रेशियो नंबर डिवाइड न्यूट्रॉन नंबर बाय प्रोटॉन नंबर ता से फैक्टर टा डिसाइड करो से तार वैल्यू टा डिसाइड करिवो whether the nucleus will be stable or unstable. Okay, some of the factors है जेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखा वाला in lighter nuclei आपको लाइटर न्यूक्लियर को जार एटॉमिक मास लेस देन 40 और 56 है तो हम लाइटर न्यूक्लियर बेसिकली कंसीडर करा जाए तो लाइटर न्यूक्लियर इन लाइटर न्यूक्लियर if the number of neutron and number of proton is approximately equal, then will be stable. Then it will be a stable nucleus. That is n by z nearly equal to 1. लाइटर न्यूक्लियर मन करे जार एटॉमिक मास टा 56 रु कम थाए बेसे आराम से रंदा 40 रु कम थाए जन धरा जाए तो सेमाने स्टेबल कि नाही हम कि नाही जदि तांकर कोन हेतै नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाखापाखि समान थाए ता रेशियो टा केते थाए 1 होतो इक्वल टू 1 नियरली इक्वल टू 1 होतो सेमाने कहबा जे माने स्टेबल न्यूक्लियस बोली जदि कम कि अधिक हला सेमाने अनस्टेबल हे ओके सो दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो in case of lighter nuclei. Similarly, heavier nuclei concept is जो heavier क्या heavier nucleus कहते हैं the nuclei having atomic mass greater than 56 are called heavier nuclei. Second, in heavier nuclei if the number of neutron is very greater than number of proton, then it will be a stable nucleus. Then it will be a stable nucleus. That means n, that is n is very greater than z. जदि a हेतिबो ताले एटा स्टेबल न्यूक्लियस हबो तो एबे कॉन्सेप्ट से काहे के डांचो काहे के न्यूक्लियस हेवियर न्यूक्लियर न्यूट्रॉन नंबर टा अधिक दरकार बिकॉज़ प्रोटॉन भितर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन आसजो तो से न्यूक्लियस को बांधी रखिया ताको हेल्प करियो न्यूक्लियर फोर्स को से डोमिनेट करियो चेष्टा करियो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ी हला तो न्यूट्रॉन्स रखि देला अधिक रहिला भितर से कोन हो ना से जो प्रोटॉन संख्या कम होला न्यूक्लियर एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एते अधिक होबन तो आ न्यूक्लियर फोर्स टा बढ़ी जो डोमिनेट करियो तो सेटा को बाइंड करी रखियो तो दिस इज द वेरी कांसेप्ट रीजन बिहाइंड why in case of heavier nuclei the number of neutrons must be greater than the number of protons to make it a stable nucleus. Clear? Okay, so this is the concept of first factor, neutron proton ratio. Second factor, कौन even odd neutron or Z. even odd neutron or Z यदि न्यूट्रॉन संख्या बा प्रोटॉन संख्या इवन की ऑड थिबो से कांसेप्ट अनुसार भी स्टेबिलिटी डिटरमाइन होता है
तो देखा वाला केतरे जारे केते केस रे जदी इवन इवन अछंती जदी प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन then that nuclei is most stable. Similarly, if proton or neutron either of them जेकोसी गोटे जिन सहित जड़े इवन थो जड़े ऑड थो ताहाले भी सेटा स्टेबल आछे ओके जदी सिंपली ऑड ऑड थिबो त सेटर लेस स्टेबल देखाला किंतु ता भितर केतला देखाला सो लेस स्टेबल जोन रहले खाली ऑड ऑड नंबर रहला माने प्रोटॉन संख्या ऑड अछि और न्यूट्रॉन संख्या भी ऑड अछि सेटा सबटर कम स्टेबल इवन थिले दिजन उभय इवन थिले सबटर हाईएस्ट स्टेबल से और ऑड इवन थिले बा इवन ऑड थिले से माने मीडियम रे इन बिटवीन मॉडरेट रे किंतु जो ऑड ऑड होची लास्ट सबटर कम स्टेबल तांको एतरो केतेडा न्यूक्लियड देखाइ छि न्यूक्लियस देखाइ छि जोडा कि बहुत स्टेबल ओके तेरा से एक्सेप्शन केस रहउछि तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखिबा ए रे if the number of proton and number of neutron are even both, then that nucleus is most stable. Second point, if the number of proton and number of neutron are either even or odd even, then the nucleus is lesser stable. Okay, जदि ये इवन थिबो ये ऑड थिबो बा ये ऑड थिबो ये इवन थिबो ताले सेटा लेसर स्टेबल हो कंपैरेटिव काटरू इवन इवन टर. Third, if the number of proton and number of neutron are odd both, then that nucleus is less stable. Okay, that means जदि odd even बा even odd अछि ताले less stable, जदि even both अछि ताले more stable, और जदि odd both अछि ताले less stable. So the least stable sum. Okay, this is the concept of even odd number of protons and neutrons inside the nucleus. It would exception rochi. Few nuclei like H12, Li36, B510, N714 and titanium 75-180 are having odd or combination but still most stable. एटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो जदियो ये पांचटा न्यूक्लियड तांकर ऑड ऑड कॉम्बिनेशन रहउची के ना ड्यूटेरियम लिथियम बेरिलियम नाइट्रोजन और टाइटेनियम तो तथापि ता देरे कोन होची ना समान स्टेबल एक्सेप्शन रहउची ता समान बहुत स्टेबल रहउचंती. ओके, so few nuclei like this are having odd combination but still they have more stable. Okay, clear ji, this is the concept.